ये वीडियो मैं दूसरी बार बना रही हूँ क्योंकि पहली बार मैं बिना रोए कर नहीं पाई ये वीडियो। सो इस बार लाइक था आई गैदर्ड myself I was like कि रोना नहीं है। Hello munchkins, welcome back to my channel। कैसे हैं आप लोग? I hope you guys are doing absolutely amazing। It's been a hot minute I haven't shared a life update video and it's been a couple of months and it has been a roller coaster। So much is happening in my life। I personally feel that my stars are like really messed up at this point। जैसे कभी कभी एक फेज आता है ना कि लाइफ में एक चीज खराब जाती है एंड बैक टू बैक सब कुछ खराब जाता रहता है फॉर अ व्हाइल एंड यू आर लाइक कि ऐसा क्या है मैंने कि इतनी सारी चीजें बैक टू बैक खराब हो रही हैं। आई फील मुझे ग्रह शांति की पूजा करवानी चाहिए घर पर। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में एज अ ट्रू फ्रेंड प्लीज मुझे बताना कि मुझे क्या करना चाहिए एंड आई रियली नीड योर गाइडेंस एट दिस पॉइंट। विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट अस बिगिन। आई थिंक इट वुड मेक सेंस इफ आई गिव यू गाइस एन ओवरव्यू कि मैं एक इंसान कैसी हूँ इन जनरल विद रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स। सो आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। मेरे लिए फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप्स मैटर अ लॉट। आई एम समबडी जो बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं रखता है। आई फील लिमिटेड फ्रेंड्स हो बट वो लिमिटेड फ्रेंड्स आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स होने चाहिए। आई डिड हैव अ ह्यूज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स when I was in school, but then I realized that the bigger the group, the more messier it is, like more gossips, more misunderstandings, more here and there. After school, I decided to keep a very close, small circle. I'm somebody who will go all out to help my friend financially हो, mentally हो, physically हो, guide करना हो या to protect you even। I would literally go out and do whatever I can। I had two very good friends of mine। I won't say friends, they were more like family to me and उनको literally सब कुछ मेरे घर के बारे में inside out पता था। I knew them inside out, I knew their family and उसमें से एक friendship मेरी ऐसी थी जो literally मेरी 15-16 साल की friendship है। And if you guys have been following me for a while, you might know whom I'm talking about। If not, I don't want to pinpoint or name that person। Just to make this story time or this thing like much easier, let's name this person as water। so water and I समझ जाओ मतलब लिटरली पूरी स्कूलिंग हमने साथ में की है। हमने अपने करियर स्टार्ट किए, फर्स्ट ब्रेकअप, फर्स्ट रिलेशनशिप, फर्स्ट सैलरी, फर्स्ट टाइम कॉलेज जाना, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, यूज टू शेयर लिटरली एवरीथिंग। जब हम छोटे थे ऐसी फ्रेंडशिप हो गई थी हमारी, लाइक लिटरली जो कोट होता है ना, टिल death do us apart। I really thought it was that kind of a friendship। When it comes to friendships, no, मेरी ego मैं बहुत साइड में रख लेती हूँ। छोड़ो यार, फ्रेंड है, दोस्त है, it's okay, like let's ignore it। फ्रेंड है, बहन है, ignore it। When I tell you that you are a family member, मैं उस पर्सन को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लाइक इफ आई एम स्विचिंग करियर्स, you'll be the first person I'll call and I'll ask should I do this। like उनका opinion मेरे लिए बहुत matter करता है because you play a very very important role in my life। if I'm buying a car, should I buy this car? Do you think this is the right financial decision? Please help me out, I really need help and I feel I need their presence in my life in a way to help me or guide me that this is the right decision। now water and I, बहुत सारी friendships होती हैं वो साथ में ऐसे grow होती हैं। मेरा एंड वाटर का रिलेशनशिप विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, इट ग्रू लाइक दिस। आवर वैल्यूज एंड थिंकिंग रियली स्टार्टेड क्लैशिंग अ लॉट। सो द वे वी थिंक एंड रिस्पेक्ट रिलेशनशिप्स, चाहे वो बॉयफ्रेंड्स के साथ हो या फ्रेंड्स के साथ हो, हाउ वी ट्रीट अदर पीपल, हाउ वी जज द अदर पर्सन, हाउ वी ट्रीट आवर फैमिली मेम्बर्स, what are our goals। do we want to grow together or do we want to grow in a way कि just मैं ही बढ़ूँ and दूसरा वाला ना बढ़े। like grow in a very competitive way or grow in a very healthy way, if that makes any sense। things did not turn out that way and things sort of became very aggressive, though we never spoke about it। that's the funny part। it was always like a silent thing that we always felt। cut to July this year। जुलाई से 2 महीने पहले अप्रैल में वाटर एंड आई वी सॉर्ट ऑफ लाइक स्टॉप्ड टॉकिंग। मैं अपने फ्रेंडशिप्स में डोंट माइंड बीइंग द फर्स्ट पर्सन टू ऑलवेज कॉल, बी द फर्स्ट पर्सन टू ask to hang out, always the first person to call, always the first person to text। I was always the one sharing everything about my life from A to Z, which was like super dumb of me। मैं अपनी पूरी की पूरी बुक ऐसे खुली रख दी थी and I just let that person come and just like
ओके ठीक है, हिमाद्री ये कर रही है, हिमाद्री वो कर रही है, ब्ला ब्ला ब्ला. एंड इन रिटर्न शी नेवर टोल्ड मी एनीथिंग अबाउट वॉट वॉज हैपनिंग इन हर लाइफ. आपकी खुद की बहन हो या भाई हो, आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होगा तो यूल कॉल योर पेरेंट्स, यूल कॉल योर सिबलिंग्स, यूल कॉल योर बेस्ट फ्रेंड, यूल टेल दिस खुशी वाला न्यूज़, राइट? हमारे केस में कैसा होता था, लाइक आई वॉज द वन ऑलवेज कॉलिंग एंड टेलिंग हर दिस इज समथिंग गुड हैपनिंग इन माई लाइफ. On the other hand, she never really used to tell me anything, and I used to get to know like something is happening via her stories, and that really used to hurt me. Okay, यार ये बंदी मेरे को इतना भी importance नहीं देती that she would call or tell me that उसके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है. चलो ठीक है, इग्नोर किया. I felt really really bad. I was like, ठीक है, okay, I did not make a huge fuss out of it. I felt bad for a sec, but I was like, चलो ठीक है, okay, whatever. I helped her a lot throughout her career, telling her कि क्या करना चाहिए and क्या नहीं करना चाहिए, because I did went through a lot of things before and I did not want her to go through that rough patch. And like me being a true friend, I used to like literally guide her without even the thought of like कि वो मेरी competition होगी या वो मुझसे ज़्यादा कमा लेगी, वो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी, या ये मेरे से ऐसा हो जाएगा. नथिंग एट ऑल. लाइक आई यूज टू बी लाइक सुपर सेल्फलेस, एंड इवेंचुअली आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट टू नो दैट जिस इंसान को मेरे घर के A to Z सब कुछ पता था, मेरी फैमिली हिस्ट्री पता थी, शी न्यू हम किस बैकग्राउंड से आए हैं, शी न्यू मेरा बचपन कितना ज़्यादा फाइनेंशियली मैं कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है. इवन दो लाइक शी न्यू एवरीथिंग, शी वॉज लाइक टॉकिंग शिट about me around, which is like super sad because I was so vulnerable in front of her. She spoke shit about my family, my parents, and it was like so hurtful. वो मेरे बारे में बकवास करती ना, मैं तभी भी समझ लेती, but when it came to my family, it literally broke me. That was it. It's better that we call off this friendship. I don't want to cry, but it was like really bad, you know, like just so I was saying that जिस इंसान को मैंने अपनी बहन माना, अपना सब कुछ बताया, she knew everything inside out, मेरी फैमिली में क्या था, I taught her so much, I did so much for her, and this is what I got in return. I was getting to know a lot of things about her, like how she used to spread like these informations to people around, which was super misleading, so against my nature. It was like so toxic the way she used to portray me in front of other people. It was just like straight up breakup. Her last words were like she was not even apologetic for it. Last words were like that she doesn't give a fuck about anything and like she doesn't care. वो भी 16 साल की फ्रेंडशिप, इट्स नॉट अ जोक. आप लोग सोचोगे लाइक हिमाद्री वाई फील सो बैड व्हेन यू न्यू दैट आप लोगों की फ्रेंडशिप में इतनी प्रॉब्लम्स थी, इट्स बेटर टू लेट गो. इट्स बिकॉज लाइक आई ऑलवेज कंसिडर हर एज अ फ्रेंड. उसको शायद फ़र्क भी नहीं पड़ा हमारी जब फ्रेंडशिप टूटी. लाइक शी वॉज कम्प्लीटली ओके. इतना बैक टू बैक झूठ बोला है उसने मेरे से. व्हेन यू love somebody so much that you become so selfless, you put your ego aside, you keep everything aside just to protect that friendship. And जब सामने वाला बंदा आपको ऐसे धोखा देता है ना, बहुत बुरा लगता है. And a lot of things came out which I'm sure उसी ने बोली होंगी because she was the only person who knew about all this. कोई चीज़ कोई बोल ही नहीं सकता उसके बारे में because it was a very confidential information. I used to cry all the time that I had to go and visit a therapist to get a third person POV to understand if I am at fault. I wanted to understand if yes I was, I would be more than happy to go and apologize. Not only उसने मुझे hurt किया, but she was hurting multiple people at once. There were 3-4 people she was hurting at the same point. People around her are literally crying. They are so broken, and how can she be like so normal with it? Yeah, I completely forgot to mention ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें बोली थी that literally my mom cried. Literally removed everybody from Instagram. She removed me, she removed my sister, she removed Milo, she removed all my friends around, and literally everybody. And that is so immature of her. I would have never done that. Like I didn't like, चाहे उसने जितना भी बकवास बोला हो, I never unfollowed her, and I was like कि I would not do this बचकानी हरकत.
Now, while I was dealing with all this ना, I was completely home alone. मम्मी जा रखी थी दिल्ली for some work. इसी हफ्ते में a lot of things happened. I was already dealing with two different kind of breakups with two different friends, two different scenarios. Simultaneously, जो मेरा दिल्ली का warehouse है, वहाँ पर जिन owners के साथ मेरा agreement बना था, one random day I get a call that हम लोगों ने ये घर बेच दिया है. From now on, you will be paying to the new owners. Now, this is like completely out of the blue. I have absolutely no clue ये new owners कौन है, क्या है. And ये है अगस्त की बात and September first week में मेरा agreement खत्म हो रहा था इस वाले warehouse का. These people come and they every single time they visited the property or the place, they would, without permission, without prior info, they would like simply just barge into the house, sit on our sofa and tell us to do this, do that, and randomly move around the house without our consent. These are like the basic rights that a tenant gets, is that the owner cannot visit the place जब भी उनका मन करे. They need to give at least 24-hour prior notice before visiting. ये लोग कुछ भी नहीं बताते थे और सीधा घर के अंदर घुस के दे यूज टू टॉक टू माई एम्प्लॉयज एंड दे यूज टू आस्क माई एम्प्लॉयज कि इस घर का कितना रेंट है, इस घर का कितना कॉन्ट्रैक्ट कब तक होगा. पहली बार हुआ, ठीक है, आई कम्प्लीटली इग्नोर्ड, आई डिड नॉट टेल एनीबडी. सेकेंड टाइम हुआ, आई गॉट रियली पिस्ड बिकॉज हमारे बहुत सारे शूट्स होते हैं. बहुत बार आई एम इन ब्लाउज, आई एम वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स, आई एम वेयरिंग शॉर्ट ड्रेसेस, गेटिंग शूट्स और वट एवर डन. रैंडमली आदमी लोग घुस रहे हैं घर के अंदर. I am not comfortable and there are girls working there. Rooms check कर रहा है. That is completely not right. It's a big no. Simply texted the owner कि hey, I hope आपका सारा काम वाम हो गया होगा. I like spoke in a very good manner and I told them that please next time आप आओगे हमें prior info कर देना because I'm most of the time not there and आप उस टाइम पे आइएगा जब मैं होंगी so you guys can clear whatever doubts you have. I was like, okay, I will do that. Don't worry about that, whatever, blah, 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 blah. Now, simultaneously, इन्हीं owners के family member मुझे back to back call करते हैं कि rent हमें हमारे account में डालो, हमारे account में डालो. And I'm like कि मैं rent आपके account में नहीं डालूंगी because हमारा agreement आपके साथ नहीं हुआ है. मैं पुराने owners को दूंगी. पुराने वाले owners call नहीं उठाते हैं हमारे. I'm like कि this is between you guys. जब तक हमारा agreement नहीं revise होगा, I would not do that. After telling that owner 3-4 times already that please हमें prior info कर देना, the next day itself she sends her electricians and like plumber वाले भैया. I could have been like shooting there. आप घर के अंदर ऐसे कैसे भेज सकते हो बिना बताए. हमारी कल ही बात हुई थी, आप कल शाम को ही बता देते कि आज सुबह आप भेजोगे तो I would have been mentally ready and I would have been physically be present at the warehouse. उसने कहा call me, I really want to talk to you. तो I called her. मैं यहाँ पे शूट कर रही थी घर पर. Literally started shouting on me. I'm already pissed because I'm going through a lot of stuff. She started shouting, I don't like the way you do this, do that. I'm like, listen, these are like very basic etiquettes. This is the only thing that I'm asking you to do is just give me a heads up before you guys visit. कि बहुत ज़्यादा heated argument हुई. मैंने कहा, see, if you do not agree with me और अगर आपको नहीं पता कि ये टेनेंट के बेसिक राइट्स होते हैं, आप किसी लॉयर से कांटेक्ट कर सकते हैं. आपको लॉयर भी यही बोलेगा, दीज आर लाइक द बेसिक राइट्स. कि देखो अपनी तमीज, तुम लॉयर को बीच पे लेकर आई हो. तो बेसिकली बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ है. शी टोल्ड मी टू लीव द हाउस. आई टोल्ड हर आई एम नॉट लिविंग द हाउस बिकॉज सेप्टेम्बर तक मेरा लीज है. यू कैन नॉट किक मी आउट ऑफ द हाउस. बिकॉज ऑफ दिस आई विल स्टे टिल द एंड. मम्मी थी दिल्ली में. अब हमारे पास बचे हैं 20 दिन, ठीक है, टू फाइंड अ न्यू हाउस. कोई नया घर नहीं मिल रहा है. सो करके हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा इसी लीज को एक्सटेंड करा देते हैं. मीनवाइल हमें दूसरा घर नहीं मिल जाता. 1 साल के बाद आपका जो ओनर है वो 10% का ही रेंटल हाइक दे सकता है. was already paying around 20,000 for that rented place. ये लोग कहते हैं कि हम 20,000 से सीधा 25,000 लेंगे if you want to extend the lease. Legally, you cannot increase the rental rate more than 10%. This goes for the previous owners. हम तो new owner हैं, ये वो. पर मैंने कहा हम लोग तो पुराने रेंट में रहने वाले हैं ना, आप हमारे साथ कैसे कर सकते हो. कह रहे हमें नहीं पता, अगर आप देना चाहते हो तो दो, वरना आप घर खाली करो. Simultaneously at this point मेरे मौसा की डेथ हो गई. Now if you've watched 3 के teasers जिसमें 2 के जो फादर बने थे ना वो मेरे मौसा जी थे. And it was all of a sudden he was not going through anything, कोई बीमारी नहीं, not hospitalization, nothing. He just went out to the ATM and वापस ही आते आते he had a cardiac arrest and he died like literally right there and then. हम बिल्कुल भी prepared नहीं थे mentally for all this. So of course मतलब सारे rituals वगैरह हुए. While I was dealing with this friendship shit,
you know, like I lost my mausaji, I was dealing with this rent thing simultaneously. It of course definitely affected me mentally because it was a lot for me to take in. Because I was also launching Phul Se Pyare too. I had to be mentally sane so I could tell my employees to do or get things work. I couldn't even take a day off because I had to do things. I wasn't able to come on social media and even talk to you guys, face the camera, and tell you what was happening. And that definitely affected my numbers on social media. That couldn't create content, you know, like जब दिल टूटता है ना, I know मैं जितना रोई हूँ इस टाइम में, जितना दर्द मुझे इस पीरियड में हुआ, it's very hard for me to even explain that. People like started complaining that we are going to unfollow you, unsubscribe you because you're not consistent, and that really like affected me more. Like that was like literally cherry on top, जहाँ पे मैं और बहुत और ज़्यादा टूटने लगी. मैं इस सिचुएशन में व्लॉग भी क्या करती, वहाँ पे मौसा की 13वीं हो रही है, चौथा हो रहा है, मैं यहाँ पे लिटरली अपने फ्रेंड्स के लिए रो रही हूँ. अगस्त तो ख़त्म हो गया है. जैसे ही सितंबर स्टार्ट हुआ, आई स्टार्टेड गेटिंग बैक टू वर्क. आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट एज मच एज पॉसिबल. इमेजिन व्हाट हैपेंड. Imagine, chalo. Let me help you guys a little. My laptop just one day decided not to work. I was just like simply watching a Netflix series and अचानक से मेरी screen black हो गई and stopped working. I thought like maybe battery issue. I started charging that laptop. Nothing happened. मैंने बोला motherboard का issue है and उस पूरे motherboard को change करना पड़ेगा 54,000 में. 54 freaking 1000. Can you imagine? एंड 2 साल भी नहीं हुए मेरे लैपटॉप को. 54,000 का मदरबोर्ड चेंज कराने के बाद दे गिव मी ओनली 90 days की वारंटी. सो माई लैपटॉप वॉज सपोज टू कम अराउंड 16th of this September. On 15th they call me and they tell me that मैम बाकी सबके जितने कंपोनेंट्स आने थे सबके आ गए, आपका कंपोनेंट नहीं आया है. आपका लैपटॉप अब आपको मिलेगा 29th September को. 2 हफ्ते और डिले. सो द एंटायर मंथ आई डू नॉट हैव माई लैपटॉप. I have to be regular on my social media. So I started using my phone to film my video. This is my phone that I'm using. I'm using my phone to edit so that I just don't miss an upload. जब तब MacBook देने गई थी ना, वहाँ 5-6 लोगों ने और अपना MacBook दिया था एंड उनके साथ भी सेम ऐसी ही कुछ इशू आ रही थी. सो उन एप्पल वाले सर्विस वालों ने बोला था, इंजीनियर ने, कि एक बार हम लैपटॉप रिबूट कर लेते हैं. कभी कभी रिबूट करके बाद ठीक हो जाता है सिस्टम. सेम वही रिबूट वाला चीज़ सबके सिस्टम में. क्या, जस्ट इमेजिन अगर 5 लैपटॉप थे वहाँ पे, 5 में से 4 लैपटॉप रिबूट होके चलना शुरू हो गए. दैट 1 लैपटॉप ऑफ जो नहीं चला, दैट वॉज माइन. I feel so helpless without my laptop because I cannot do so much stuff. I have so much branded commitments, so many different things. And अभी तो मैं बहुत कम पोर्शन बता रही हूँ आपको, बस मेन चीज़ें. साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीज़ें चल रही. टू कॉन्स्टेंटली वर्क, टू प्लान अहेड आगे के मंथ्स में क्या कंटेंट जाएगा, टू गेट इन टच विद ब्रांड्स फॉर रिसोर्सिंग, टू हैंडल दी, टू हैंडल माई वर्क, टू हैंडल माई पर्सनल वर्क. आई हैव टू कीप माई सेल्फ मेंटली सेन. आई हैव टू हैव इनफ X amount of money in my bank account so I can run my house. If you did not know, I am the one handling अपने पूरे घर के खर्चे, दी का सारा खर्चा. I have a lot of responsibilities, you know, like literally A to Z सारा का सारा I am handling. So to always have that, you know, like that mental pressure, struggling with work, struggling with that, this and that. I feel कहीं ना कहीं मेरे दिल में मुझे सही लगता है that the decision that I took was the right decision. But I definitely miss that person. Water was very special to me and I will always miss a sister. I will always cherish the memories that we had together. Unfortunately, we won't be able to continue those. Or we won't be able to continue creating those memories, or maybe like be together till death do us apart. And that's it. Thank you so much for sticking around. काफी लंबी वीडियो हो गई. And if you've made it till the end, thank you so much for watching. Subscribe to our channel if you haven't already. And I'll see you guys in the next video. Bye.